Hello and welcome to our new initiative of Gold Tide IAS Academy. So, without wasting any time, let's get started. But before that, you can also post video after every such question and you can also post your score below in comment box. So now let me started. Or question number 1. With respect to Euroclear platform, foreign investment platform, consider the following statement. First, under this framework, foreign investor will not have to come to Indian market and register as a foreign portfolio investor. Second, it will directly lead to increase in interest rate on bond and hence government will not be able to raise cheap money. So here we will have to find out which of the above statement is our correct one. So now before we jump into our explanation, let me clear our concept first. So bond price and interest rate have inverse proportional, right? If price of the bond will increase, then rate of interest will decrease. Let me understand it by simple example. For example, आज मैंने एक बॉन्ड खरीदा जिसकी प्राइस थी 100 रुपीज़ और उसके ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था. अब थोड़े दिन बाद एक दूसरा बॉन्ड आया जिसकी भी प्राइस थी 100 रुपीज़ और मुझे मिल रहे थे 12%, राइट. सो अब मुझे पहला वाला जो बॉन्ड था जिसके ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, अगर उसे मुझे बेचना हो तो मार्केट में बहुत ऐसे बायर हो गए जो इसको खरीदेंगे, राइट, क्योंकि उनके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है जिसके ऊपर उनको 12% मिल रहा है. तो मुझे क्या करना होगा, इसकी प्राइस मुझे घटा देनी होगी. तो मैं इसकी प्राइस कर दूंगा 80 रुपीज़, राइट. सो अब आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट हाई होगा वैसे ही हमारा बॉन्ड प्राइस कम होगा और वैसे ही वाइस वर्सा रिलेशन है, राइट. सो नाउ our second statement that was incorrect one. Why? Because if more and more foreign investor will invest in government of India's bond, then as I told you that interest rate and bond have inverse relation, hence interest rate on bond will decrease and that means the government will able to raise cheap money. Hence our second statement that was incorrect one. Our first statement that is correct. Why? Because right now we have situation that if any foreign investor wanted to invest in the government of India's bond, then he or she has to be registered as a foreign portfolio investor, right. But now RBI is planning to launch new platform there. In this platform, if the foreign investor is registered on Euroclear platform, then he or she does not require to register as a foreign portfolio investor. Hence now we can say that our final answer will be A, that is only A, right, because our second statement that was incorrect one, right, because interest rate on bond will not increase, it will decrease. Now our question number 2. So question number 2, carriage system of irrigation is majorly seen in Afghanistan, Japan, Israel or United States. So now let me understand it by simple example. सो दिस इज़ आवर कारज सिस्टम. सो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पर्सिपिटेशन के द्वारा जो भी वाटर हमारे क्रस्ट के एक्वीफायर में स्टोर होता है, तो हमारी जो कारज सिस्टम है जो मोस्टली अवेलेबल है हमारे सेमी एराइड और एराइड रीजन में, राइट. तो यहाँ पे जो भी वाटर स्टोर होता है एक्वीफायर में, वहाँ पे ऐसे रीजन में एक वर्टिकल साफ्ट बनाया जाएगा. फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया वर्टिकल साफ्ट, राइट, और उसके ऊपर बहुत सारे हॉरिजॉन्टल साफ्ट बनाए दिए जाएंगे, राइट. सो अब जैसे ही हमारे एक्वीफायर से पानी आता है तो वो हमारे एंटर होगा वर्टिकल साफ्ट में ऐसे. तो आपने एक सिंपल एग्जांपल या एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा और आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो कि आप एक पाइप लेना और पाइप के एक एंड पर आप अपना हाथ रख देना और दूसरे एंड से आप पानी का फ्लो इंट्रोड्यूस करना और उसके ऊपर वर्टिकल साफ्ट जैसे यहाँ पे है वैसे बनाना. तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगता है. तो उस हिसाब से यहाँ पे जो भी पानी स्टोर होता है वो धीरे धीरे अपने आप से ऊपर चढ़ने लगेगा, राइट. हमें पंप की ज़रूरत नहीं होगी पानी पानी को बाहर लाने के लिए. तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पानी हमारा ऊपर आएगा. तो यहाँ पे हमारे जो भी लोग हो गए सेमी एराइड रीजन में जो रहते हैं वो अपना पानी यहाँ से बाहर ले सकते हैं, राइट. सो ऐसे ही सिस्टम, इस सिस्टम को हम कहेंगे कारज सिस्टम. तो कारज सिस्टम जैसे कि मैंने बोला हमारे एराइड और सेमी एराइड रीजन में पाई जाती है, राइट. तो हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान जो है वो सेमी एराइड और एराइड रीजन में आता है. तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा अफगानिस्तान, राइट. सो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन. नाउ let we have a look into our question number 3. So question number 3, consider the following statement. First, coral are given schedule 1 status under Wildlife Protection Act 1972. Second,
of all main reef structure in India except Lakshadweep all have fringe reef. Third, coral transplantation has not been experiment in India in any coral habitation. So here we will have to find out which of the above statement is our correct one. So before we jump into our explanation, let me understand various type of coral. So here we found mainly we found three type of the coral, right? So first one is that fringing reef. Sorry. So first one is that our fringer reef. Second is that barrier reef, and third is atoll. So in our first type, we found that this is our volcanic island, right? एंड फ्रिंजर रीफ हमारे वॉल्केनिक आइसलैंड से बिल्कुल टच होके बनता है, राइट? सो ये सेलो वाटर में पाया जाता है और हमारा बैरियर रीफ होता है। तो बैरियर रीफ में और फ्रिंजर रीफ में डिफरेंट ये है कि हमारा जो रीफ है और उस जो हमारी जो लैंड है उसके बीच में एक लगून बन जाएगा। और हमारा जो एटॉल है, एटॉल में हमारा जो ये जो भी लैंड एरिया था वो टोटली सबमर्ज हो जाएगा और हमारा जो बाकी रहेगा वो होगा सिर्फ रीफ, राइट? तो उसको हम कहेंगे एटॉल रीफ। सो अब देखते हैं हम हमारे एक्सप्लेनेशन को। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो सही था क्योंकि हमने जो हमारी जो कोरल रीफ है उसको हमने शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्शन दिया हुआ है। और हमारे जो रीफ कोरल रीफ है वो हमारे टोटल 5 रीजन में पाए जाते हैं। उनमें से है गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, कोस्ट ऑफ मालवान और सिंधुदुर्ग इन महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ गोवा एंड लक्षद्वीप। So out of that, except Lakshadweep have a fringe reef, right? Lakshadweep have an atoll reef. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लक्षद्वीप के सिवा हमारे जो बाकी जहाँ भी हमें रीफ मिलता है कोरल रीफ, वहाँ पे हमारा है फ्रिंजर रीफ। एक्सेप्ट लक्षद्वीप, वहाँ पे हमें एटोल रीफ मिल सकता है, राइट? एंड हमारा थर्ड स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने गोल्ड कोरल ट्रांसप्लांटेशन का और ट्रांसपोर्टेशन का एक एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया था। तो वो क्या था, हमने गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु वाज फर्स्ट स्टेट to experiment with coral transplantation in 2002. Hence our third statement that was incorrect one. So our final statement or final answer will be C, right? That is a 1 and 2 only, क्योंकि हमारा third statement was the incorrect one. Coral transplantation has been experiment in India, right? So that was our incorrect statement. Now question number 4. Question 4. Consider the following nation. First, Bhutan. Second, Nepal. Third, Bangladesh. So which of the above nations share same number of boundary with Indian state? So let me study our map first. So as we can see in the map that Nepal share its border with the 5 Indian state. Those are Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim, right? And whereas Bangladesh also share its border with 5 Indian state, those are West Bengal, Tripura, Meghalaya and Mizoram, right? So here it is a Mizoram and Assam. So this is Assam. So and we can also see the Bhutan share its border with only 4 states. These are Assam, Arunachal Pradesh, West Bengal and Sikkim. So we can say that Nepal shares its border with 5 Indian states and Bangladesh also shares its border with 5 Indian states. Hence our final answer will be Nepal and Bangladesh, and so that our final answer will become 2. That is 2 and 3 only. Question 5. With respect to Legislative Assembly of State in India, consider the following statement. First, like President, Governor does not make customary address to the member of House at the commencement of first session of the year. Second, minimum age to qualify to be member of both House of State Legislature is 25 year. Third, when the state legislature does not have rule on the particular matter, it follow Lok Sabha rule on that matter. So here we will have to find out which of the above statement is our incorrect one, right? So here we will have to vigilant. They are asking about incorrect statement and not a correct one. So now let me have a look into our explanation. So our first statement, that is incorrect one, because he can also address the state legislature at the commencement of the first session after each general election and the first session of the each year. Our second statement, that was also incorrect, because to become a member of legislative assembly we require not less than 25 year of age, and to become the member of legislative council minimum age that required is 30 year. Hence our second statement, that was incorrect one.
Third statement, that was also incorrect, right? Because it is not mandatory in the constitution for state legislature to follow or copy the rule of Lok Sabha, because speaker of Vidhan Sabha have power to interrupt various provision of the constitution of India and rule of the procedure and conduct of business of that assembly, right? So speaker have all authority to do whatever they want, and he does not require to follow Lok Sabha rule. Hence, that statement was also incorrect. So our final answer will be D. That is, all of the above statement is our incorrect one. So this is all for today. You can also solve rest of 5 question by clicking link below in description, and you can also post your score below in comment box. So thank you so much for watching video. See you soon in next video.